气球总是带给小孩甚至大人欢乐和笑容，但是在孟加拉，气球却包含了不知多少童工们的汗水和辛劳。他们在罔顾安全的环境里，用健康和童年换取微薄的薪酬，勉强谋取温饱。身为一个妈妈呢，我看到这样的场面呢，我是非常的 stress， 很大压力。孟加拉的男孩子是不是注定从小就要工作养家？梦想对于他们是不是太遥远了？ স্কুলে পড়তে পারলে তো ভালোই তো কিন্তু টেকার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ চাই যে পোলারে পড়াশোনা করাও ভালো একখানে ভর্তি করাও কিংবা একটা ভালো একটা বেকার ওদের দেবো না。我经常跟我的孩子说，你拼命读书是为了自己的将来。我会不会间接的鼓励一种以自我为中心的心态呢？孟加拉位于恒河下游，是人类古老的文明之一。早在公元9世纪，孟加拉人已经形成一个独立国家。恒河三角洲土地肥沃，人口稠密，曾经是亚洲南部经济最发达、文化最昌盛的地区。但是近200年来，它的命运却非常坎坷。孟加拉在英国殖民地时代成为印度的一部分，印度独立的时候又被任意分割，归入巴基斯坦。但是孟加拉和巴基斯坦之间的语言文化差异巨大，经历了残酷的战争和民族大迁移，孟加拉在1972年才终于宣布独立。但是这片土地已经元气大伤。孟加拉的政治动荡不安，工业落后，经济疲弱。首都达卡人口拥挤不堪，建设破旧。由于工资非常低廉，因此出现了一些劳工密集的工业，以工作环境恶劣、工资不合理而恶名昭彰。甘南吉查是达卡南部的一个社区，这里大约2.9平方公里，但是人口却高达80万人，是全世界最拥挤的地方。这里有一条恒河的支流，称为布里甘加河。沿着河边是一片贫民区，卫生条件很差。但是由于租金特别低廉，吸引了不少手工业到这里生产。而恒河就是他们的运输线，在这里不愁找不到廉价的劳工，而其中大部分就是儿童。我已经沿着达卡城市著名的布里甘加河走了好一会儿，我在寻找的气球工厂呢，原来就在河的旁边。我的那位同工呢，就在里面苦干。我们现在继续看一看。Hey, Noor. How are you today? Good. Noor 今年10岁，在气球工厂打工已经2年多。
所谓的工厂，其实就是用木板和新板草草建搭的小屋，设备简单，是一个小型的家庭工作坊。除了老板自己，就只有3名小童工。工厂里弥漫着橡胶的味道，童工工作的时候，双手总是沾着大量的粉，这样橡胶才不会粘在手上。How long did you take to learn to do the work here? প্রথমে আমি এখানে 2 বছর 2-3 মাস লাগছে কাজ শিখতে। এখন আমি সব কাজই মোটামুটি ভালোই পারি। It's very dusty here. Why are you not wearing a mask? কাজ করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে, অপায় আর মুখোশ লাগবে না, মুখোশ ছাড়াই কাজ করে যাবো। Working in this environment can damage your body. Have you ever fallen sick before? না, এটি লাগে না, ভালাই কাজ করে।工厂制作气球的过程其实十分粗糙和原始，老板和老板娘也会动手帮忙。那儿每天早上8点就到工厂工作，一直到傍晚5点。由于工厂里没有灯，天色暗了就不得不停下来。这些气球都是利用大自然的阳光晒干，遇到雨季就不能进行，因此制造气球的步骤也按着季节进行。为了让我了解整个过程，小朋友于是从头开始向我示范制作气球的每个环节。工厂前面就是布里干加河，取水十分方便，但是对小年纪的孩子来说，需要3个人齐心合力才能完成。这是制造气球的第一个步骤，把橡胶融化掉。其实呢，这几天它是不需要融化橡胶的，因为它每1个月呢只是融化1次，那这1次的橡胶量呢就足以做1万个气球那么多。至于燃料，也是就地取材，把捡回来的小木片敲碎，加上一些煤油，就可以开始起火。希望呢这一次会烧到木柴。可是呢，我们完全就没有防范措施，所以没有保护工具，所以这个东西呢随时都会爆炸的哈，我们整村人都会受到影响了。Why are you not wearing gloves and mask? আমাদের সমস্যা নেই, মুখ সহ্য হয়েছে। I've brought something along that I think will help. 身为一个妈妈呢，我看到这样的场面呢，我是非常的 stress， 很大压力。因为你看她的脚那么靠近火源，我站到那么远，我都担心了，完全就没有保护。然后这凳子呢站在上面，地上是凹凸不平的，完全没有平衡，太危险了。这个步骤主要是把橡胶融化，加入酸性的化学原料，因此过程中弥漫着呛鼻难闻的气味。这可是沸腾的橡胶啊！他们就这样赤着手呢，从铁桶里面把这个橡胶舀上来。工厂里有3个大水槽，装着不同颜色的液态橡胶，这就是制造气球的材料。在化学作用下，橡胶不会轻易凝结，反而不断发出挥发性气体。把有条状的木架浸在橡胶原料中，就会形成气球的模型。主持过3期的节目呢，这一期的童工的工作性质对我来说是最惊讶的，因为整个气球制作的过程呢是充满危险的。就说第一个步骤，在融化那个橡胶的时候，从起火到搅拌那个橡胶，到把橡胶舀出来，每一个过程，孩子们都可能受非常严重的伤害。和其他小朋友一样，问他们为什么不戴手套，为什么不戴口罩，他们都说因为已经习惯了，反正每天都这个样子，应该是对身体没有什么伤害的。大人也是这样说，小孩子也是这样说，因为保护儿童的这个意识完全就不存在。
老板哈山说，他自己小时候也是一名童工，给别人做气球。长大后掌握了这门手艺，就自己开了这家小工厂。他现在已经成家立业，有3个孩子。Have you always employed children, or did it just start recently? বাচ্চারা কাজ মানে খুব ভালো বোঝে, এই কারণে ওদের দিয়ে কাজ করে একটা মানে আনন্দ আছে, ভালো লাগে কাজ করতে। You have 3 children. Are your children also in the same business? আমার বাচ্চাগুলো এই কাজ করাই না, পড়াশোনা করে লেখাপড়া করতেছে। Do you think this work is dangerous? এই কাজ করতে অনেক সময় খারাপ লাগে, কিন্তু বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। আমাদের সেরকম কোনো দুর্ঘটনা হয়নি。在工厂里面呢，整个制作气球的过程呢，有一部分呢，我是有一点点失控的。来这里之前呢，我是有一点担心的，因为我们家小朋友，我的老三今年5岁，他特别喜爱气球。我不知道我看了整个气球制作的过程之后呢，我会不会受到感动到不愿意买气球给他玩？我认为这件事情已经发生了，所以今天有一点点失控，因为我们新加坡的小朋友真的很幸福，他们很喜欢玩气球，可是我们的小孩子的欢乐是建立在这里的小朋友的血汗上面的。Do you like your job? স্কুলে পড়তে পারলে তো ভালো হইতো, আবার টাকা পয়সা নাই তো, এর লেগে বাধ্য হয়ে এই কাজ করতেছি। আমি টাকা পয়সা নাই দেখা স্কুলে পড়তে পারলে ভালো হইতো, কিন্তু টাকার জন্য বাধ্য হয়ে কাজ করতেছি। আমি যতদিন পারি এই কাজ করে যাব। Do you think you will ever go back to school? চাই আমি কাজটা বাদ দিয়ে স্কুল পড়তে। স্কুলে পড়তে তো টাকা লাগবে, এর লেগে তো পড়তে পারি না, নাহলে তো স্কুল পড়তাম।我到了孟加拉，造访那里的气球工厂，和3名童工一起劳动，我感受良深。我也不了解为什么一个大人可以让小孩子干这样的活。气球带给大家的是欢乐，但是带给童工们的却是什么呢？那儿每个星期工作6天，每周工资大约300达卡，相等于新加坡5块钱左右。这就是他的收获。虽然失去自由和玩耍的时间，但是比起一些在街上游荡、无所事事的孩子，那儿觉得工作更有意义。辛苦了一整天，现在孩子们呢要到附近的河边去洗澡，我也跟着去。嘿，喂！由于天气十分炎热，孟加拉的孩子都习惯不穿上衣。忙碌了一天，全身都是白粉和橡胶的味道。到河里洗澡，不但可以把白粉和橡胶的味道一扫而空，也是童工们一整天唯一的玩乐时间，可以让他们忘记一天的苦闷。Act 3 10， 他们这样一跑呢，就把一天的疲劳和灰尘全部都洗掉了。It's inside. Inside. Okay. 过后，我跟随那儿回家，看看他住的地方。那儿的家就在气球工厂后面的巷子里。这些拥挤的房子，很多都是小工厂和储藏仓库。周围孩子很多，就是没有看到学生，到处都是放工回来的孩子。吃完牙川，终于到家了。Salam alaikum. Hi, hello, mother. Mom? Hi, salam alaikum. Nur, mommy, how long have you lived here?
2 years. I see. Wow, it's a nice house. Can you show me around? 感觉上好像我走入他的卧室一样，这确实是一个卧室。我身后呢有一张大床。Mommy, this is for the children to sleep or for you and Daddy? 2জন ঘুমাইছে আমরা ওই ঘরে ঘুমাই তো মা ওরে লিয়ে আমরা 4জন ওইদিকে থাকি 2জন ওইদিকে থাকি আসলে আর বড় ভাই原来 Noor 是家里的宝宝，所以呢，她是和爸爸和妈妈睡在外面的那一张床的。Noor 的妈妈在别人家当帮佣，今天因摄制队的要求而特地回家一趟。Noor 还有2个哥哥，加上父母亲，一家5口住在这里。但是大家都去了工作，房子显得空荡荡。除了2张大床，煮饭吃饭也在这里。家里的东西全都摆放在这房子里，柜子里还能养心爱的宠物呢。Why are the chickens inside? Nice. ওটা বিলাই মুলাই খাওয়া লাগবো না আর লেগে আর এই জায়গায় তো বিলাই মুলাই কেউ বিলাই মুলাই এনে কেউ কিছু নিতে পারবো না আর এমনি রাখলে তো মাইরা লাগবো That's funny. Where does the cake come from? So we better put them inside, okay? And that's the mummy over there. 你看，他跟我们家小朋友都是一样的，这个年龄的小朋友呢，就爱收集这种卡片。不过这些卡片呢，就是板球球星的照片，对不对 ？Which one is your favorite? Number 1. সাকিব আল হাসান Oh, Noor, can you give me a pose of a favorite star? Yes! Yay! You've been staying here for about 2 years. How much rent do you pay for the house? 8,000 Do you have trouble coming out with the money? সব সমস্যা না কাজ থাকে না সময়টাতে বাজ্যা থাকে দিতে পারি না খাইমু না দিমু দিতে কষ্ট বাজ্যা যায় আর কি সবসময় পারা যায় না Can you tell me the last time you were in a dilemma? বাজারের টাকা থেকে সময়তে থাকে না ওই ঘর ভাড়া দিয়া ওই যে দিতে হয় দিলেও ওই যে হয় না আয় তো নাই কাম থাকে তাহলে আয় থাকলে সে ব্যয় করা যায় কাম নাই তো দেন ওই যে এখানে জায়গা কাম নাই দিকে তো জায়গা এক দেশে জায়গা শিখালি সেই কাম এই দেশের আর কোনোটা পারেও না ওই দিয়ে যাইব ওই নিয়ে যাইব তাহলে 100 হোক আর 150 কি আর কি কোনো সময় 80-90 টাকা হয় ঠিক নাই3个孩子当中，老大和老二曾经上过2年的小学，到了那儿家里人多了，经济更不好。那儿1年级还没念完就辍学打工。Nur, do you want to go back to school again? আমি আবার স্কুলে যা পড়াশোনা করে বড় হইতে চাই পড়াশোনা করে বড় হয়ে খেলোয়াড় হইতে চাই ক্রিকেট খেলোয়াড় Ah, cricket player, nice. You like cricket? খেলোয়াড় হওয়ার জন্য পড়াশোনা দরকার আছে That you are right, okay? If Noor or the other children do not go to school, then they will never be able to find a better job. কাজে না দিয়া যদি কোনো এরকম যদি পারতাম তাই তো আর ওই যে কাজে পড়াইতে পারতাম টাকা পয়সা লাগবো না টাকা পয়সা ছাড়া তো লেখাপড়া হয় না এর লেগে তো ওই যে পড়াইতে পারি না ঠিক মতো Have you seen Noor working in the balloon factory? How do you feel? কাজে দিই যখন গাম বায়া পরে তখন তো দেখলে ভালো লাগে না কী করার আছে গরিব মানুষ স্কুলে লেখাপড়ার সময় তখন করতে হয় কাজ Working in the factory, has Noor ever hurt himself? How badly? এমনি কোনো আঘাত টাঘাত পায় নাই তো এমনি কোনো আঘাত পায় নাই ওই যে ইয়ের থেকে গ্যাসে ঘুষে অসুবিধা হয় দেখে তো যে সারাই লাইলাম কাজের থেকে যে গ্যাস ভিতরে গেলে বলে অসুবিধা হয় পারে না করতে পারে না দেখে এলে আইসি শুরু না傍晚时分，Noor的大哥和爸爸终于回家吃饭。二哥由于工厂不肯放人，无法回来了。Noor的爸爸是一名劳工，收入微薄，因此3个孩子从小就得打工帮补家用。大哥 Ashik 其实年纪也不很大，今年15岁，
阿什原本是在那儿的同一家气球工厂当童工，2年前找到一份更好的差事，收入比较多，于是便由弟弟那儿去接替他在气球工厂的工作。从阿什身上似乎可以看到那儿的未来。我和阿什约好明天去看他的工作。我去拜访那儿的家，了解他无法上学的原因。他的大哥阿什原本也在气球工厂当童工，2年前换了一份收入比较好的工作。我打算去看看他的工作情况。恒河上的小船是这里的老百姓每天的交通工具。这些小渡轮没有安全标准，经常超载，翻覆的事件时有所闻。但是当地人却不把它当一回事，也没有人去理会，因此渡轮的安全问题始终没有得到改善。那儿的哥哥以前也是在气球工厂工作的，可是现在因为他的身体比较健壮了，所以已经升级到船上去当助理，不需要长时间在高温度、臭气弥漫的情况下工作。他的生活现在是不是已经好转了呢？阿什 ，Hello, how are you? Okay. So this is your boat. We're gonna get on it. Okay. Oh my goodness, look at that. Okay, you're gonna give me a hand, 2 hands, come on. 这个用木板搭建的简单结构，就是一个繁忙的码头，人来人往，大家都要搭船到对岸去工作。由于停泊的船太多，出发的时候需要用人力把船推出去。阿什工作的船算是比较大的，配置了柴油发动机，每一趟载满的话，可以载100多个人。阿什的工作主要是向搭客收钱，这里没有售票的制度，收钱找钱完全靠记忆。阿什每天早上7点就开工，一直工作到晚上10点，船客渐渐稀少，船主才收工。每天大约工作15个小时，1个星期7天，从不间断。不过一天可以赚200大卡，大约新币3块钱。比起以前在气球工厂打工好多了。阿什赚回来的钱全都交给爸爸，反正自己也没有什么时间花钱。工作了一段时间之后，船主也教导阿什一点修船的技术。阿什头脑机灵，一点就通。现在凡是船上遇到一些小问题，船主就交由阿什自己动手修理。今天我要体验一下阿什在船上当助理的工作。阿什 ，Can you teach me, please? Yes. Yeah, good. Let's go. 看起来好像不是很难，不过需要很多力气，我倒不知道。等一下我试一试就知道了。我现在明白什么叫9牛2虎之力了。有没有人帮我计时啊？看我可以支撑多久？啊 ？Cannot? Many times? Keep going. 不可以停止，你一停止呢，这个铁的部分就会掉下来，所以是不可以停止的。Cannot stop, yeah?
算了吧，我回家去照顾孩子好了。我跟你说，我现在是超热，现在是中午时分，而且今天的那个温度是36度，我超热，可是要穿着这个衣服，因为这里是回教的国家，所以呢，不可以给人家看我的背部。师傅，请。Action！This job, is it better than what you were doing before in the balloon factory? এই কাজটা আমার অনেক ভালো লাগে। ওই কাজ আগে ছোটোবেলায় করেছি, ছোটোবেলায় ওষুধকালে বেতন কম পাইতাম, পোষাইতো না। আপা এই জায়গায় কাম করি 200 টাকা হাপ্তায় পাই, রোজ পাই, যা পাই ঘরে দিয়া দিই। এই জায়গায় আমার কাম ভালো লাগে, কারখানার কাম ভালো লাগে না। In this job, is it dangerous? Have you ever hurt yourself? একবার এই হাতে যে এই আঙ্গুলে ব্যথা পাওয়ানোর কারণে ওই কাজটা ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ ব্যথা পাওয়া যায় বেশি, এই কারণে এই কাজটা ছেড়ে এই কাজে লাগে।河道很小，有好几次船走得非常靠近，差点发生碰撞，十分危险。船上没有任何救生衣，遇到灾难就只能听天由命了。 Ashik, you are already 15 years old. Do you think your life will change from here? Will you be doing a different job? আমার স্বপ্ন বড় হইলে ভালো একটা লোক হমু, ভালো একটা কাম করুম, জানি আমার ভবিষ্যৎ খারাপ থাকে, বাপ মারা লিয়া জানি চল্লা বিড়া খাইতে পারি, এমন একটা কাজ করুম, ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করানোর চেষ্টা করুম। এই আমার ইয়া, এই কাজ তো আর হারা জীবন করুম না, আর হারা জীবন এই কাজে জীবন যাব না। Soon maybe you will get married and have your own babies. What if your children, just like you, need to go to work while they're very young? সব মা বাবারাই তো চায় যে পোলারে পড়াশোনা করাও, ভালো একখানে ভর্তি করাও, কিংবা একটা ভালো একটা কিছু করতে চায়, ভবিষ্যৎ ওরাও যেন ওকে ভবিষ্যৎ করে এটা খাইতে পারে। এই জন্য অগর স্কুলে পড়াবো, এই কাজে তো দেবো না, এই কাজে ওদের দেবো না।一艘载着几十个人的船，就由一个15岁的孩子掌舵，在繁忙的河道上来回穿梭，几百条人命交在孩子手上，似乎不可思议。但是在孟加拉，不可思议的事实在太多，大家都习以为常。我们竟然安全顺利的靠岸了。Thank you, Ashik. I hope I didn't get you into trouble. 今天和阿诗一起工作呢，我可以说是百感交集，感动比较多。他虽然年纪轻轻，才15岁，可是他却可以踏踏实实的工作，养家糊口。他的工作又辛苦，收入又微薄，而且老实说没什么前途。我觉得年轻人就应该有做梦的权利，追梦的机会。可是我担心阿诗卡两者都没有。 孟加拉其实在2006年已经通过法律禁止雇佣16岁以下的孩子工作，但是官方的条例形同虚设，几乎没有人遵守。据报道，孟加拉目前有470万名童工，就是说12.6%的孩童都在工作。像甘兰吉察这个地方，每家工厂都有童工。 我拜访了甘兰吉察这一区的民选议员塞都麦坡，他向我说明了，在孟加拉要消除童工，不能单靠法律。সবার এটার জন্য সচেতনতা হবে, সচেতনতা সবার যদি মাঝে থাকে, তাহলে আগে আমাদের শিক্ষার হার ছিল অনেক কম, বর্তমানে শিক্ষার হার বাংলাদেশে গভর্নমেন্টের আমলে, জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের শাসন আমলে, তা আমরা যদি আরেকটু সচেতন হই গার্জেন বা সমাজসেবকরা, তাহলেই এবং আপনাদের মতন যারা আসছেন এরা যদি একটু ইয়ে করেন,
বা এদেশের মিডিয়া যদি আর একটু সচেতন।孟加拉有一半的人口是文盲，教育水平低一直是国家的大问题。近年来，政府大力推动教育，甚至提供免费的小学教育。无奈，如果家庭贫困，宁可选择让孩子打工。只有城市里的中产阶级才会认真的让孩子上学。至于女童的教育，政府更是加大鼓励，女童享有8年的免费教育，上学的话还能享有津贴。但是孟加拉人让女儿上学，往往另有目的。那天在工厂的时候就认识了 Noor 的同伴 Robbie， 我觉得他真的好可爱，很讨人喜欢。所以现在呢，我就要到他家里去拜访他。嘿 ，Salam alaikum。Hello Robbie 妈妈。Hello， 爸爸你好，你好，你好。May I sit? Sit. Thank you. So this is Robbie's sister. What's your name, sweetheart? সুবর্ণা Shubhana. Yeah. Nice to meet you all. Wow. So the 4 of you live in this house? Yes. And all 4 of you sleep on this bed? Yeah. Okay. Wow. It's very, very tight family. Robbie 的家比 Noor 的家更拥挤，房间只能摆放1张床，墙上还堆满了铝制的锅。这条小巷里住了30多户人家，大家共用一个厨房和厕所、浴室。这里没有小工厂，纯粹是住宅，每户家庭就是一个间隔。So, mommy, are you working? What do you do? আমি ওই পাতিল সিলভারের কাজ And what about Robbie's sister? Does she also go to work? না পড়ালেখা করে School. And daddy, what do you do? আমি মার্কেটে কাজ করি। She gets to go to school, but why does Robbie not get to go to school? মানে মেয়ের স্কুলে পড়াই আর ভালো জায়গা যেন বিয়ে হয় আর কি রবিউল স্কুলে পাঠাই কাজে ছেলে মানুষ ইনকাম করতে পারবে এর লেগে啊，OK，原来是这样。在孟加拉社会呢，女孩子上学，政府是会给津贴的，所以呢是要鼓励多一点女孩子上学。另外一方面呢，妈妈也解释到，女孩子要有一点基本的学历，才能找到好归宿。难怪呢，我到处走呢，很多童工都是小男孩，比较少看见小女孩。As a mother, I'm just wondering, is this fair that the daughter gets to go to school and the son doesn't? আমরা গরিব মানুষ মানে ইনকাম করলে সংসারটা চলে সেই জন্য মানে ওপরে কাজ দিতে হয়েছে নাকি আমি বুঝি আমরা ইনকাম করতে লেগে মানে ইনকাম করে সংসার মানে চলার জন্য মানে কাজকর্ম করতে ঘর ভাড়া দিতে হয় খাওয়া দাওয়া চলতে হয় চলে না এই কাজকর্ম এর লেগে বলবো আমি আর ছেলে ঘুমের হয়নি সকাল Robbie 的父母曾经让他上过2年的课，之后就放弃了。现在有姐姐继续教他读书识字，因此简单的文字他也看得懂。 এখন মা বললেন দেখে 但是教育不是单单教导识字，只是上学对这些家庭来说是一种奢侈，还不如趁早学一门手艺更实际。Why did you decide to send Robbie to a balloon factory? মানে বেলুনের কারখানা মানে সবচেয়ে সহজ আর তো কোনো কাজ পারে না এলা বেলুনের কারখানায় কাজে দিছি ওই কাজটা পারে সহজ বাচ্চা মানুষ এটার জন্যই দিছি মানে পাতিলের কাজে মানে আমরা যে কাজ করি তার সমস্যা এলা বেলুনের কারখানায় কাজ করে তো কোনো সমস্যা নেই বাচ্চার এর লেগে ওইটা সহজ দেখে ওরা ওইটা দিছি Did you also start going to work when you were very young? কত বছর প্রায় 10 বছর এই পাতিলের কাজই করছি পাতিলের কাজে আমি পড়া থেকেই করি আর অন্য কাজ করিনি Daddy, how about you? Are you worried at all? এই সমস্ত কাজ তো অনেক সহজ তো মনে করেন আমি তো কাজে কামে যাই অলরেডি চিন্তা করি এলিও মনে করেন কাজে দিছি আবার অলরেডি অনেক টেনশন করি কাজে থাকি নিজে Robbie, what do you want to be when you grow up? আমি ক্রিকেট খেললাম Okay, so are you practicing hard now? হ্যাঁ Yeah? Mommy, do you think you will ever get to be a cricket player? আর যদি সুযোগ পাইতো খেলাধুলা করে না তাহলে খেলাধুলা করতো
除了工作危险，其实孟加拉这样的手工业并没有什么前景。这些工厂生产的气球质量都不能达标，很难销售到外国，只能在当地市场售卖。不过，我问了好几家商店，商家都说现在外国入口的气球又好又便宜。孟加拉的小工厂是迟早被淘汰的夕阳工业。这也说明了 Nur 和 Robbie 的手艺将来不会有什么前途。童工的问题其实涉及整个社会的制度。如果教育和就业无法接轨，家长就会选择牺牲孩子的教育，童工问题将无法解决。我暂时把孩子们的教育问题放在一边，为了明天带小朋友去游玩，我决定去买他们梦寐以求的球棒，以满足他们当板球球星的梦想。板球在孟加拉非常盛行，而现在呢，又刚刚好是板球的季节。明天我打算带小朋友到户外去打球，所以现在呢，买几个新的板球棒。I'm looking for a bat for like children about 9 to 10 years old. Yes. Small bat? Yes. Okay. 这个包装比较好看嘛。如果要送给3个小男孩的话，如果包装不一致，他们一定会不开心的。所以我叫老板呢，其他2个也要换同样的包装。Hello, hey Ashik. Hello, hello, hello. How are you? 这一天，气球工厂正好休息，而阿什也特地向船主请了半天假，和弟弟一起去玩。难以置信的是，尽管甘兰吉察距离市中心只有几公里，但是这还是他们生平第一次乘车离开家，来到热闹的达卡市中心。What's that? Oh, the stadium. 来到这家餐厅的顶楼，最吸引他们的是望下去就在眼前的板球体育场，这令他们兴奋不已。他们曾经在电视上看过崇拜的球星在这里打球，大家几乎梦寐以求，有一天自己也能走进球场参加比赛。The juice is here. Who wants orange juice? Yummy? Good. Chicken, yeah? 我特别开心，因为我觉得他们今天很享受，看得出呢，他们是非常非常的轻松的。让我感到欣慰的，给我很大的鼓励的就是小朋友们已经开始和我沟通了。虽然我们彼此呢是有语言障碍的，可是呢，他们已经开始用手势啊，或者是肢体语言啊跟我沟通，我很开心。吃完午餐后，我们来到了达卡市中心的游乐场，这也是他们第一次上游乐场。都市里有很多孩子都沉迷于电子游戏，游乐场显得有点过时。可是对这4个孩子来说，却是他们难忘的一天。খালি উপরে উঠছে আর নিচে নামছে এর জন্য ভালো লাগে এটা আমার জীবনে প্রথম হচ্ছে এটা আমার ভালো লাগছে 我们一到了游乐场呢，他们就兴奋地手舞足蹈。
虽然他们年纪小小呢，就已经进入了劳动队伍，可是呢，他们还是像其他小朋友一样，童真还是存在的。这一点呢，让我非常非常的安慰。Hey boys, look! Who wants a cricket bat? Here. Thank you, thank you, thank you, thank you. Let's open it up and see. Wow. Yay, a brand new bat. Awesome. You're gonna open up the bat. You don't want to open it? Really? 他们不舍得把这个塑料袋把它取掉，因为它永远就是要这个球拍呢是崭新的，对不对 ？You know what? I'm going to leave it up to you, okay? Yeah. 一天下来，看来最让他们惊喜的是拿到新的板球棒。他们迫不及待就在公园里打起板球，吸引了不少路人旁观。今天他们好像当了板球球星一样。不要看他人小小，他挺厉害的 ，OK？ Okay, here, and I hit like this. 你看他们玩得多开心！他们呢，就像我们家的小朋友一样，是非常容易满足的。一支球拍，一粒球，他们就可以在这个球场玩上大半天。我也尝试了板球，第一次尝试板球，比我想象中的还要难。所以我一点天分都没有，反而是 Noor， 我觉得他蛮有天分的。他的手脚蛮灵活的，可能有潜质哦。每天各自忙着打工，阿旭和 Noor 这两兄弟还是第一次聚在一起打板球。阿旭说，他已经很久没有看到弟弟这么开心了。How did you feel when you know that your brother also had to work in the factory? নূর মোহাম্মদের দেখে আমার ছোটবেলার কথা মনে হয় যে আমি ওই স্কুলে পড়তাম, কিন্তু রমেনে থাকতে কাজ করছি। আবার স্কুলে পড়ুম কি, আর ছোটো ভাইয়েরও স্কুলে ঠিকমতো পড়াইতে পারি না, ওই কামই করা হয়। What is your ambition? What would you like to be if you had a choice? আমি যেহেতু আপায় ভোট চালাই, ভোট না চালাই যদি আমার 3-4টা ভোট থাকতো কিংবা 4-5টা ভোট থাকতো, তাহলে আমি নিজে করে এটা খাইতে পারতাম। মানুষের কাম করানো লাগতো না, মানুষের গালাগালি চিল্লানো লাগতো না। নিজের যদি 5টা-6টা ভোট থাকতো তাহলে তো নিজেই মালিক হয়ে যেতাম।度过了愉快的一天，孩子们就要回到现实，继续他们日复一日工作的生活。他们认真工作的情景，他们对家人承担的精神，都让我留下深刻的印象。我觉得这两兄弟呢，虽然年纪轻轻，可是工作态度非常认真，很勤奋。可能 Noor 他现在年纪还轻，不懂得有梦想。阿旭年纪大一些，他已经开始有理想了。从第一期节目到现在，受访的童工们都说，我拼命工作是为了让家人过更好的日子。重点是孩子为家庭做出贡献。相反的，我经常跟我的孩子说，你拼命读书是为了自己的将来。我在想，我会不会间接的鼓励一种以自我为中心的心态呢？那我是不是应该改口说，宝贝，你努力读书是要成才，那你才可以为家庭、为社会做出贡献呢？其实这期节目我是非常纠结的，因为一方面我觉得我没有资格批判童工的父母亲和工厂老板，在这一代童工文化根深蒂固，父母亲、工厂老板他们本身以前也是童工，所以在这样的环境里是没有人会认为谁在剥削谁的。可是另外一方面，传统是可以改变的，社会是可以随着时代的步伐而进步的。改变来自哪里？我真的没有答案。
不过我可以很确定地说，童工们是无助的，他们是无辜的。我衷心地祝福他们，希望他们平静无事，希望他们的日子能过得好一些。